चैनल। तो आज से हम करने जा रहे हैं DSA। ठीक है, तो DSA हम करेंगे जावास्क्रिप्ट पर, ओनली जावास्क्रिप्ट, क्योंकि यार यही मुझे आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम टॉपिक्स कौन कौन सा करेंगे, मतलब पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम बिगो से। ठीक है, दैट्स द बिग थिंग इन DSA। उसके बाद एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एरेज एंड ऑब्जेक्ट्स, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न्स और उसका अप्रोच। ठीक, उसके बाद आता है मेन एल्गोरिदम सारा, रिकर्जन, डिफरेंट सर्चिंग एल्गोरिदम, बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, फिर कंपेयरिंग ऑल द अबव सॉर्टिंग एल्गोरिदम, फिर सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम को कंपेयर करें कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, फिर मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, रेडिक्स सॉर्ट तो शायद पढ़ाया नहीं जाता है कहीं भी, लेकिन एक मिनट हम दिखा रहे हैं कौन सा कोर्स हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई एम टेकिंग कोर्स फ्रॉम यूडेमी से ही है, और तो कहीं से कोर्स है नहीं। खुल जाएगा यूडेमी, माई लर्निंग्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स का कोर्स हम ले रहे हैं ओल्ड स्टील से। ठीक है, विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट इंस्ट्रक्टर्स फ्रॉम यूडेमी। और सारा सिलेबस है यहाँ से हम लिख चुके हैं ऑलरेडी, सारा सिलेबस। रैडिक सॉर्ट जो है ये तो शायद कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन इस कोर्स में है। ठीक है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और अभी कोई डेडलाइन सेट नहीं की है कब तक कंप्लीट करना है कुछ भी है, लेकिन आइडियल 120 डेज यानी 4 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करना है पूरा का पूरा DSA। ठीक है, और फिर देख लेते हैं कौन कौन सा है। रेडिक सॉर्ट हो गया, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स में आएंगे। ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट, स्टैक्स क्यूज, बाइनरी सर्च ट्रीज, BSTs को कहते हैं, ट्री ट्रेवर्सल, बाइनरी हीप्स, हैश टेबल्स, ग्राफ ट्रेवर्सल, डायक्स्ट्राज एल्गोरिदम। ठीक है, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग सबसे लास्ट में आएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम करेंगे, पहला दिन है हमारा, तो DSA में बिगो करेंगे। ठीक, तो देखते हैं बिगो क्या है क्या नहीं है। तो शुरू करते हैं कोर्स अपना, और बिगो नोटेशन, इंट्रो टू बिगो। Hey, welcome back. So this is the first real section of the course, and we're kicking it off with something really important, something big. It's called Big O notation. And when I say big, I don't mean that it's long or difficult even. It's big in significance. It's something that I had no choice. एक मिनट, सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं। ये तो खैर ऑलरेडी सेव हो जाता है, एक नया बना लेते हैं। और नोटबुक है, रूल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैंक ही नहीं, ब्लैंक नहीं, देखते हैं। स्क्वायर्ड पेपर, ये कैसा होता है? चलो चलो ठीक है यार, जैसा भी है। ये नहीं यार, ये नहीं चलेगा। ठीक, को डिलीट करते हैं। अरे डिलीट कैसे होगा ये? एक मिनट, यहाँ से डिलीट होगा। फिर से नया क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे, और नोटबुक, डॉटेड पेपर। ठीक है, ये थोड़ा सही लगता है मुझे देखने में। तो इसमें हम पढ़ेंगे आज से बिगो। तो नोट्स भी लेते जाएंगे हम, कि बाद में रिवीजन करने में आसानी है। चलो ठीक है, तो हम आज से इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं बिग ओ। ये पहला चैप्टर है ना, बिग ओ। ठीक, ओके, एक बार चेक कर लेते हैं स्ट्रीम चल रहा है या नहीं।
ओके, लाइव है हम, तो शुरू करते हैं कोर्स से. But to ठीक है. start the course off with this topic, because at least if I wanted to make it a good course, because it's going to come up in, I won't say every single video, but maybe 70% of the videos in the rest of the course. Don't hold me to that, but a lot of videos, a significant number. We're going to refer back to what we talk about in this section. So before I even explain what it is, I have a quick warning. There's a bit of math in this section. And I'm warning you not to scare you away, but actually to encourage you to push through it if you do struggle with math, or if you're someone who, hasn't heard the word. मैथ से तो थोड़ा बड़ा स्ट्रगल सब करता है, ठीक है, हम तो करते ही ऑब्वियसली. Logarithm ever, or in 10 or 20 years. That's going to come up in this section at the end, but don't panic, because what we're going to do here in this section is establish a framework for talking about code in the rest of the course. And that does involve some math up front, but it means that the rest of the course isn't going to be, some of it will be mathy, definitely, but this is not indicative of what the rest of the course will look like. So just push through it. If you like math, great. If you have some problems with this section, just remember that the entire course isn't like this. And we're just getting it out of the way because, like I said, it has to come first. I don't really have a choice. Okay. यानी बिगो से ही शुरू करना है पूरा का पूरा. चलो ठीक है, थोड़ा मोड़ा मैथ होगा तो कोई दिक्कत है नहीं, इतना तो समझ ही सकते हैं. ठीक है, कौन सा कैलकुलस या बहुत बड़ा कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने देगा. Sorry if I scared anybody there. Let's talk about the objectives for this section. So in this video, we're going to start by just talking about the need for something like big O notation. I haven't even mentioned what it is. So we're going to get to that. Then we're going to describe what it is. So why we care about it, what it is. We're going to learn to simplify big O expressions. We'll define time complexity and space complexity. We'll evaluate time complexity and space complexity of different algorithms using big O notation. And then we'll describe algorithm is a bit of math at the end there. So I know it's a lot, but we're going to start. मोटिवेट द नीड फॉर समथिंग लाइक बिग ओ नोटेशन. ठीक है, यानी सबसे पहले क्या नीड है बिग ओ नोटेशन का डीएसए में, वो चीज़ देखेंगे सबसे पहले. उसके बाद डिस्क्राइब व्हाट बिग ओ नोटेशन इज. ठीक है, बिग ओ नोटेशन क्या है. सिंप्लीफाई बिग ओ एक्सप्रेशंस, पता नहीं. ठीक है, डिफाइन टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी. काफ़ी सदियों से सुन रहे हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी स्पेस कम्प्लेक्सिटी, बट आज समझेंगे क्या है एक्चुअली में. ठीक. Evaluate the time complexity and space complexity of different algorithms using big O notation. ठीक, ठीक है. So describe what a logarithm is, यानी इसमें log आएगा. ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा तो पढ़े थे हम log, देखते हैं याद रहता है कि नहीं. Start with this first bullet point. Motivate the need for something like big O notation. So what is the idea here? Well, this course is about algorithms, it's about solving challenges, it's about computer science and data structures, but for every topic in this course, there's 10, 20 different implementations or solutions that could work, probably way more. How do we know what's best? So let's scale it down a bit just to a single problem. Let's say that there are two valid solutions to a problem. They both work, and they're different, not just in names or variable names or something, but totally different in approaches. One uses a loop, the other uses, a list or a string or something to accomplish the same task. How do we know which one is best? That's really what Big O is about. It's a system, it's a way of generalizing code and talking about it and comparing code and its performance to other pieces of code. ठीक है, तो जहाँ तक हम समझें, यानी कोड को कितने एफिशिएंटली हम लिख सकें, यही है बेसिकली शायद. इमेजिन वी हैव मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम फंक्शन. ठीक, यानी किसी एक सेम फंक्शन को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, यानी लूप लगा के या मल्टीपल या नेस्टेड लूप लगा के या फिर कुछ और करके, पूरा का डिफरेंट तरीका. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट. ठीक है, हाउ कैन डिटरमाइन विच वन इज द बेस्ट. ठीक, तो बिगो से हम पता करेंगे कि कौन सा फंक्शन यानी कौन सा कोड बेस्ट है एक फंक्शन में. ठीक, about it and comparing code and its performance to other pieces of code. Okay, so here's a more concrete example. Write a function that accepts a string input and returns a reversed copy. If I asked you to do this, which maybe some enterprising students will do this and come up with some creative solutions, off the top of my head, I can come up with 3-ish solutions.
दिक्कत ये है यार, जावास्क्रिप्ट किया हुआ मेरा बस लगभग 5 मंथ्स हो चुका है, और जावास्क्रिप्ट उसके पहले टच नहीं किया, यानी उसके बाद। एक मिनट गिटहब खोल के देखते हैं। अरे पहले हटो यार, ये एक बार गिटहब खोल के दिखाते हैं तुमको यार मेरा कैसा कर रहा था। हिस्ट्री गिटहब का पिछले 6 मंथ से हम गायब हैं कोडिंग से, यानी आई हैवंट कोडेड मच। ये देख रहे हो, कहाँ चला गया, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 2023 आई वॉज कंसिस्टेंट, और उसके पहले भी। लेकिन मार्च फरवरी, एक मिनट, फरवरी 20 के बाद कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है अगस्त तक। ठीक है, तो होपफुली पूरा कंसिस्टेंट रहेंगे। गिटहब पे तो नहीं, लीड कोड पे। गिटहब पे क्या करना है, मेरा काम नहीं है डीएसए में गिटहब पे। ठीक है, तो बस दिखाने के लिए कि इतना से हम कोड नहीं कर रहे थे, तो ठीक है, तो दोबारा हम कूदे हैं कोडिंग में। तो फिर से शुरू करते हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो जावास्क्रिप्ट का जितना ही मेथड है, फंक्शंस है, लूप है, वो सारा एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो नोट्स मेरे पास बना हुआ है, एक मिनट, सेव तो किए थे नोट्स। यस, ये जितना भी है सारा नोट्स है मेरा, और सबसे रिवीजन करेंगे। ठीक है यार, तुम हट जाओ, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है अभी। चलो शुरू करेंगे हम नोट्स फाउंडेशन से। फाउंडेशन में उसके बाद ऑब्जेक्ट्स, इंटरनेट, नमस्ते जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फाउंडेशंस में सारा कुछ है, इसको ही करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे, इतना ही कर लेंगे। मेरा बेसिक जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा, और उसके बाद एक और चीज़ हमको करना है, वो है इलॉक्वेंट जावास्क्रिप्ट। इलॉक्वेंट जावास्क्रिप्ट को हम पढ़ेंगे, इलॉक्वेंट जावास्क्रिप्ट। तो इसको भी हम ऑनलाइन ख़त्म करेंगे, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है पूरा का पूरा सारा चीज़। तो इसको भी करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट मेरा कम्प्लीटली बहुत अच्छे से हो जाएगा कवर। ठीक है, ठीक है, वो सब करेंगे बाद में, पहले हम ये कर लेते हैं। कहाँ चला गया माउस। ओके, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग इनपुट एंड रिटर्न्स अ रिवर्स कॉपी। ठीक है, इसको ट्राई करें क्या बनाना, ट्राई करते हैं बना के। काफ़ी दिन हो गया है बनाया हुआ, एक मिनट, चलो। कॉन्स्ट, अरे कैपिटल में आ गया, कॉन्स्ट अरे है ना, राइट फंक्शन दैट रिवर्स कॉपी, राइट अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग इनपुट, अच्छा, एंड रिटर्न अ रिवर्स कॉपी। ठीक है, तो मान लिया ये स्ट्रिंग इनपुट मांग रहा है, हेलो। तो ये क्या हो जाएगा, ओ एल एल ई एच, ये करना ना, तो यही करना है। तो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले हम देखते हैं। इसमें हो रहा है, एच जो है वो लास्ट में चला गया, ई जो है वो सेकंड लास्ट में, यानी इसका इंडेक्स क्या क्या है। शुरू में इंडेक्स क्या था एच का, 0 था, 1 था, 2 था, 3 था, 4 था। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इंडेक्स सारे का क्या हो गया, ओ का इंडेक्स क्या हो गया, पहले चला गया, यानी 4। हाँ ये हुआ ना, सॉरी। अब क्या हो गया इंडेक्स, ये देख रहा है, पहले इंडेक्स ये था, अब एच का इंडेक्स क्या हो गया, 4 हो गया, फिर ई का 3 हो गया है, 2 1 0, यानी इंडेक्स क्या हो रहा है, दोनों का घट रहा है, यही चीज़ हो रहा है ना बेसिकली। ठीक, घट रहा है, सॉरी, बढ़ रहा है, क्या बोल रहे हैं, 0 हो गया, 4। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, ठीक है, यानी ओ जो है, अगर 4
माइनस 0, 4 माइनस 1, 4 माइनस 2, 4 माइनस 3, 4 माइनस 4, यही हुआ ना, यही चीज़ तो हो रहा है। तो टोटल लेंथ कितना है? लेंथ है टोटल -1 कर देते हैं लेंथ, ठीक है, उतना इंडेक्स वगैरह को लूप चला देते हैं, ठीक। लेट मी सी, 4 1 4 2 4 3 4 4, यही चीज़ हो रहा है ना, और इसको लिख देंगे, ठीक है। यानी log a डॉट लेंथ -1, a डॉट लेंथ -1 क्या हो गया? 2 3 4 5, 5 माइनस ये, यानी प्रिंट होना चाहिए ये h, ठीक है। तो हम अभी pwd कहाँ पे हैं हम? फुल स्टैक नोट्स में, ठीक है। sc, एक मिनट रुको यार, ls, अच्छा एक अंदर जाना पड़ेगा, फुल स्टैक नोट्स ls, ठीक है। यहाँ पे आ गया सारा कुछ, यहाँ पे script.js है, ठीक है। तो नोड से हम script.js को चला सकते हैं। कहाँ नहीं चल रहा भाई ये? द टर्म नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द नेम, एक मिनट, इंस्टॉल है नोड या नहीं? लेट मी चेक। नोड जेएस, अरे यार नोड तो इंस्टॉल ही नहीं है। उफ, तो कोड को एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? नोड तो है ही नहीं। चलो छोड़ो, इसको बाद में करेंगे, ठीक है, हो तो जाएगा। अभी नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, नोड भी नहीं है मेरे पास। चलो कोई बात नहीं, नोड को इंस्टॉल करेंगे और different approaches, and I'm sure there are way more out there. I actually found this post on Stack Overflow that has 10 different implementations in JavaScript, and they're all different. Like I said, it's not just a different variable name, it's not just switching a for loop for a while loop. There are different approaches. How do we know if all of these work? You know, here's one using a for loop and an array. Here's one that uses no loops and it's no arrays. It's all, actually, I guess there is an array in there at one point, but it's all built-in methods. How do we know which one's best? Well, we'll get there. But wouldn't it be nice if there was sort of a system for classifying code or for comparing it, which I've already spoiled it and said that's what Big O sort of is. Think of it sort of like if we're talking about earthquakes. If this was a seismology 101 class, very early on, I would start off by talking about the Richter scale, because then that allows us to talk about earthquakes and compare them to one another, so that instead of just saying, oh, there's a big earthquake and then a bigger one over there, we can say there was a 7.5 and then a 9.2 over there. And that puts things into context. It's kind of not a great analogy, but the idea is that we can assign labels, generalized labels to our code. So instead of saying something like great or awful for our code, we can have a numeric representation of the performance of code. So that's what Big O is going to give us. Rather than colors and text like great, it's going to look a little bit different. It might look a little mathy, but it's actually pretty straightforward once you get past the first hurdle of it looking very foreign and weird. So one last point I want to make. Some of you might be wondering, if I asked you to write a function that reverses a string and you get it to work, doesn't it only matter that you get it to work? Like, why does it matter what's best? The solution you come up with is the best. And in some ways, I think that depending on your project and the context, that's true. The best solution is the one that you can get to work. But when we're talking about things like interviewing, technical interview, code. एक मिनट यार, लिंक्डइन पे हम अपलोड कर लेते हैं कि हम लाइव स्ट्रीम हैं, और अगर किसी को, वैसे तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा, लेकिन डाल देते हैं कर, कोई इंटरेस्टेड हो तो यार आ जाओ, क्या दिक्कत है, साथ में करेंगे यार, बोलिए।
ओके, तो यहाँ पे पोस्ट कर देते हैं और जो भी ऑनलाइन हो वो देख सकता है मेरा स्ट्रीम। एक मिनट, यूट्यूब @ पोस्ट, ठीक है। तो इस वीडियो का लिंक जिसको भाई आना है वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, शेयर द पोस्ट। So today is Sunday, and I have started a DSA challenge for myself. I'll be doing DSA in JavaScript and JavaScript. So today is Sunday and I've started myself and myself. I have to live stream on my YouTube channel. If anyone is interested, drop a like or leave a comment on the video. I'll be doing DSA in JavaScript. ठीक है, इमोजी डाल देते हैं जो कि थोड़ा अच्छा लगे। चलो, और हाँ, लिंक तो देना, शेयर भूल गए ना। लाइव स्ट्रीम myself on my YouTube channel. लाइव लिंक, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, वेरी वेरी गुड। लाइव स्ट्रीम चल रहा है, थंबनेल आ गया, वाओ। जिसको आना आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हेलो बोल दो, बस थोड़ा मजा आ जाएगा, और क्या। चलो ठीक है, लिंक बंद करते हैं, काम चालू करते हैं। यार फर्स्ट डे लाइव स्ट्रीम का तो थोड़ा इधर से बंद कर देते हैं और इधर से, ठीक है। Node.js डाउनलोड करना पड़ेगा, Node.js नहीं है मेरे पास। यार लिनक्स मेरे पास था, लिनक्स कमाल काम करता था। विंडोज़ इंस्टॉल किया क्योंकि हमको और भी कुछ करना है, वीडियो एडिटिंग वगैरह करना है, तो लिनक्स में होगा नहीं, तो और डुअल बूट करना पॉसिबल नहीं है मेरे पीसी में, तो दैट्स वाई। कहाँ पे थे? अरे नहीं यार, ये रहा, ओके। इसका तो कोई, ये क्या खोल दिया? अच्छा, ये लॉक पॉइंट जावास्क्रिप्ट, इसको पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। Challenges. Or you're working at a large company where you're working with a huge data set, let's say hundreds of millions of pieces of data, where one algorithm implementation could save an hour every time it runs compared to another implementation. Performance matters at that point, and there is an actual best algorithm or best solution. So it's important to have a precise vocabulary to talk about how our code performs. So even if you're content with your solution to something, it's helpful to be able to understand how it compares, how it performs compared to others. It's also good for discussing trade-offs between different approaches, because often it's not as cut and dry as I made it seem. It's not that one solution is always great and the other one is always terrible. Sometimes one solution might be great at handling really large data sets, pieces of data. Another one might
always be very consistent in the time that it takes, but it might take more time up front. There's trade-offs, so it's not always just this is the best. Also, if you're trying to debug your code, it helps to understand things that are slowing it down. Not just looking for errors, but let's say that your code is working, but for some reason it's taking a lot longer than you expect, or your computer is lagging and freaking out in the browser when you execute some function. It helps if you understand some of the things we're going to talk about in this section in Big O notation. You can actually pinpoint where some problems might arise. So it helps us identify inefficient points. And then finally, it's important to have a precise vocabulary to talk about how a code performs. ठीक है, यानी कोड कैसा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए एक वोकेबलरी है. ठीक है, यूजफुल फॉर डिस्कसिंग ट्रेड ऑफ बिटवीन डिफरेंट अप्रोचेस. यानी एक कोड को सॉल्व करने का डिफरेंट अप्रोच है और उस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, मतलब कैसा परफॉर्म कर रहा है ये कोड वर्सेस ये कोड, तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए बिग ओ है. ठीक है, when your code slows down or crashes, identifying parts of the code that are inefficient can help us find pain points in our applications. ठीक, less important it comes in the pain videos. ठीक है, you should care because यार देखो, इंटरव्यू के लिए हम DSA चैलेंज नहीं कर रहे हैं. DSA चैलेंज इंक्रीजेज आवर लॉजिकल थिंकिंग. लॉजिकल थिंकिंग इंक्रीज करता है, प्लस हम लोग को एक बेटर प्रॉब्लम सॉल्वर बनाता है. ठीक है, तो DSA का बहुत एडवांटेज है. DSA का एडवांटेज सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक नहीं है. तो इतना दिन से हम प्रोक्रेस्टिनेट करने के बाद फाइनली आई डिसाइडेड टू कम एंड कंप्लीट दिस DSA. 1 मंथ लगे, 1 मंथ तो खैर नहीं लगेगा, 3 से 4 मंथ लग जाएगा. ठीक है, 3 से 4 मंथ्स तक में फिनिश कंप्लीट DSA विथ 580 क्वेश्चंस. वो दिखाएंगे कहाँ से हम करेंगे. ठीक है, दिखाई देते हैं. तो लेट मी शो यू कि 580 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. ड्रम रोल. नीट कोड. नीट कोड या गोल्डन स्टैंडर्ड है अगर DSA का प्रैक्टिस करना है. तो ये देखो 550 क्वेश्चंस, नीट कोड ऑल, ये कैटेगराइज किया हुआ है. ये देखो 580 क्वेश्चंस दिख रहा है, ये दिख रहा है 580 क्वेश्चंस. ये 580 क्वेश्चंस करेंगे और ये पूरा का पूरा टॉपिक को कैटेगराइज किया हुआ है. तो कैटेगराइज है ऑलरेडी. 52 क्वेश्चंस सारे मतलब टॉपिक के ऊपर है और हर लैंग्वेज में. उसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है. सोल्यूशन वगैरह तो हम नहीं देखेंगे. ये जैसे जावास्क्रिप्ट में है, पाइथन, जावा, C++, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट तो खैर पता नहीं. हम लोग अगले 3 से 4 मंथ वी विल फोकस ओनली एंड ओनली ऑन DSA. 10 जगह हाथ नहीं मारना, सिर्फ DSA करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. comes up in interviews मतलब जारी a lot of times an interviewer will say something like, tell me the big O of this algorithm or if this function that you've written, or here's 3 functions, what's the big O. That will make sense in a bit, but it's important just to know for interviews. I said it's less important because hopefully you're learning it to actually understand things and to help you understand your code better and talk about your code better rather than just directly trying to master it for an interview. But interviews are important, so no judgment there either. So I'm going to leave this video off here. I'm trying to keep things more compact. Don't want any rambling videos. In the next video, we're going to pick up with a real example, some code, and start to analyze how efficient it is. If you want to check it out. टाइमिंग आवर कोड. ठीक है, सॉन्ग वुड. ठीक है, बिगो हो गया. टाइमिंग आवर कोड इसमें है, काफ़ी लंबा है सेक्शन, कोई दिक्कत नहीं है. You can, but it is not. It's not the focus of this video, so I don't want to distract from the actual focus, which is evaluating and comparing these pieces of code, not actually diving into how we write them. So just to show you this one, it does work. I have another snippet over here. I can run the same thing. Let's do it with 6 again, and I'll do. एक मिनट. गूगल क्रोम से में एक टैब है जहाँ के हम कोड कर सकते हैं. ठीक है यार, ये uTorrent टाइप हो जाता है. VS कोड में 1 मिनट. यहाँ पे एक स्निपेट टाइप का कुछ है. एलिमेंट्स में था क्या? नहीं, कंसोल स्निपेट्स. 1 मिनट. यहाँ पे स्निपेट्स है क्या यार? 1 मिनट रुको. यहाँ पे तो स्निपेट्स नहीं है. चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं आराम से, उसके बाद कूदते हैं स्निपेट पे क्या नहीं.
Command Enter to execute. लेकिन हम कोड तो करेंगे VS कोड में, VS कोड या फिर जो कोडिंग प्लेटफॉर्म है लीड कोड उसमें करने वाले हैं हम। स्निपेट पे तो करेंगे नहीं, क्योंकि स्निपेट यार कोई फ़ायदा है नहीं करके, ठीक है, क्योंकि उसमें वो VS कोड वाला ऑटो कंप्लीशन ये सब वही नहीं है, ठीक है। And I get 21. And just to walk through what happens there, it's the equivalent of taking 6 plus 1 first, which is going to give us 7. And then we multiply that by 6, which gives us 42. And then we divide by 2, which gives us 21. So it does work. It gives us the same answer in the end. Again, how it works, we'll leave that be. All right, so we established there are two working solutions. Which one is better? And of course, the first thing that we could ask is, what does better actually mean? Does it mean the faster code in seconds or milliseconds? Does it mean the code that's fastest when we're adding a small number versus a large number? Let's say we want to benchmark it at when we add up all the numbers between 0 and 1 billion. Is that a good test? Or is it about how much memory is used? Is it, the number of variables that are created, the data that is stored each time that that function is called? Or what about something like readability, legibility? How important is that? Is that better? Or brevity, that's not on here, but a lot of people care about that. They like to minimize the length, the number of characters used in their programming. Not my style personally, but definitely valid. All of these are valid concerns, and it really comes down to the situation. But I think most people would agree that the first two, especially for now, we're going to focus on speed. We'll come back to अगर DSA या फिर एफिशिएंसी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फास्टर और लेस मेमोरी, यानी ज़्यादा कम रैम, यानी कम रैम वो ऑक्यूपाई करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा कोड है इन कंपैरिजन टू मोर रीडेबल। लेकिन यार रीडेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना, ठीक है। memory usage in a bit, but these two often can be more important than something like readability. And unfortunately, they often come at the expense of readability, and that's sort of the balancing act of writing good code, is writing efficient code that doesn't use up a ton of memory, but also is still readable and doesn't look like complete gibberish. So we're going to talk about basically how all of these play together throughout the entire course. It will be a recurring theme, but we're going to focus on evaluating speed, how long code takes to execute. That's where we're going to start. So how do we do that? Well, the simplest टाइम कम्प्लेक्सिटी यही शायद होगा। way would be to use something like built-in timing functions, something like this, where we have our first add up to, and then I use a function or a method called performance.now, which in the browser is just going to tell me the number of milliseconds since the document was created, basically since I opened the window. And then so I'm going to save that to a variable before I call add up to. Then I'm going to call add up to with, what did I do? Is this a billion? I think it's a billion. So I'm going to call it with a large number. And then after that finishes, I'm going to check performance.now again, which should have incremented a bunch of milliseconds, most likely. So I have two numbers. Then I just subtract them, the second time minus the first time. And I divide it by 1,000 because it's in milliseconds and I want to work in seconds. We don't have to do that last part. And I print it out. So this should work. And I actually have a snippet right here. Same thing. So add up to our same one from before, and we're calling it with 1 billion, and we're going to print out how long elapsed. Let me clear my console first, and I'm going to execute it. There we go. 1.2575 so on seconds. Let me do it one more time. And what you'll actually see, I don't think I executed it, there we go, is that it varies. So it changes. Even on my own computer, nothing really has changed. Right? I haven't added code, I haven't changed the numbers here. It's the exact same code, but we're getting a different output. Before I forget, let's go over to the second solution. So the exact same number, let me just make sure I didn't leave off or add a 0. Yes, they are the same. And I'm doing the same thing, taking performance.now at the beginning and performance.now at the end. I guess I should show what that looks like. You can see that it's kind of a large number at this point because I've had this open for a number of minutes. If I refresh the page though, which I just did, now it's at 2,000 milliseconds, which is 2 seconds. And now if I did it again, we're at 6.6 seconds. And if we subtract the two, it's 4 seconds roughly in between. Anyway, we're doing the same thing here.
Okay, so now if I run this, you can see we get a way smaller number. But it's still, actually, I guess it doesn't look like it's changing here, is it? The measurements, the differences are too small, really, to capture. But my point is that this is significantly shorter in duration with the same data as this one. Here we go, 1.24 seconds compared to... अच्छा, यानी दो फंक्शन, दो डिफरेंट फंक्शन, मतलब दो सेम फंक्शन है लेकिन डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। एक में दूसरे तरह से लिखाया गया, यानी एक में लूप है और दूसरे में basically 0 seconds. एक वो क्या नाम है उसका यार, एक मैथमेटिकल फार्मूला से बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पे लूप नहीं यूज़ हुआ है, ठीक है। जहाँ पे लूप नहीं यूज़ हुआ है वहाँ पे क्या हो गया, टाइम इलैप्स बहुत कम हुआ, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जहाँ पे लूप यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसको हम करके अभी देखेंगे पूरा स्निपेट में ऐड करके, ठीक है, किस तरह काम करता है। So that seems... हाँ, ओके, ठीक है, तो हम करके देखते हैं अभी like a performance.now। good sign for this solution. It seems... n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यार ये फॉर्मूला है ना, वो ए और डी एडिशन वाला कुछ था, मैथमेटिक्स से पढ़े थे, भूल गए हैं। देखते हैं किस चीज़ का फॉर्मूला है। एन टू एन प्लस वन बाई टू। डोंट अंडरस्टैंड वाई एन टू एन प्लस वन बाई टू। अरे सिंपल बताओ, ये देखो किस टाइप का ग्राफ बना दिया पूरा, ये सब तो समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। seems like it's much more efficient, and that's great. But this process, it's not the most reliable of manually timing things like this before and after, and comparing it to the other function. And it's not that easy for us to talk about. How would I actually write down? How would I give it a label of how efficient this one is compared to this one? Is it based off of the percentage of speed? Is it do I subtract the number of seconds or milliseconds? It gets a little blurry. This brings us to the problem with time, which I'm reserving for my end-of-life memoir title, The Problem with Time. It's just a nice little, sounds very deep. So the first is that different machines... यार कोल्ड स्टील ना मेरा फेवरेट ट्यूटर है यूडेमी पे, पाइथन इतना ज़बरदस्त समझा है। वो अलग बात है कि हम पाइथन पे प्रैक्टिस नहीं की, भूल गए। will record different times, so it's not reliable depending on the specifications of a machine, and what's currently happening on that machine, what code is running. The time, the results you can get will be different. That doesn't really mean that we'll get the opposite results where the first solution is suddenly faster than the second one, but it means that the margins could change. The actual measurements could be different and are almost guaranteed to be different times. And as we saw, the same machine will record different times. So in my browser, I just did the exact same code, that first example, and it differed each time by a little bit. अच्छा, वो 1.25 में 1. थोड़ा बड़ा डिफरेंस था उसमें, which isn't really a problem, but it still shows that it's not precise and that we can't rely on that. And second of all, or third of all, I guess, is that for fast algorithms, things that are happening on a really, really fast scale, speed measurements might not be precise enough. We have 2 or 3 or 4 algorithms and they're all super fast and they're doing something very quickly. There still is one that is going to be fastest or most efficient. But if our timing functions can't figure it out because they're, the smallest interval of time that can be measured isn't good enough, then it doesn't really help us.
So how do we walk through our code and actually talk in general terms about which code is better without having to go and time it? So I want to be clear, I'm not saying that timing your code is a bad idea. I do it all the time. What I'm more saying is that it would be cool if there was another way that didn't involve having to set up a new file and actually go through the process of timing our code. What if our code takes, an hour, something massive, and I'm comparing it to another version that takes 4 hours? I don't want to have to run a test to figure out which one is faster. We want to be able to assign a value to, in general terms, talk about how code compares to other code without having to go through all of this. And that's where big O notation comes in. And that's coming up next. Cliffhanger, sorry. ओके ठीक है, यानी बिगो का यूज़ अगर हम नहीं किए करेंगे तो वो परफॉर्मेंस डॉट नाउ वाले, अरे ये क्या हो गया, Sorry. रुक जा भाई, अरे भाई, Okay. अरे रुक जा ब्रो, पीछे वाले लेक्चर में जाओ। All right. So let's take a look. ठीक है, रिसोर्सेस क्या है इसमें, बिगो स्लाइड्स, तो वो सब देख लेंगे। बिगो स्लाइड्स में चलते हैं, ठीक है, यानी ये स्क्रीन किस बात को लेके बंद हो रहा है अपने नाम से, फुल स्क्रीन कैसे करें, ओके ठीक है। बेसिकली हम दो फंक्शन को मेजर कैसे करें, ठीक है, एक जनरल टर्म में, बिना उसमें परफॉर्मेंस डॉट नाउ अभी जो लगाए थे उसको बिना लगाए एक जनरल टर्म में कैसे डिस्कस करते हैं कौन सा एल्गोरिदम फास्ट है या कौन सा एल्गोरिदम स्लो है, यानी जो तरीका अभी जो कोड लिखने का है, दो फंक्शन कैसे डिफ्रेंशिएट करता है कि कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। तो दैट इज़ मोटा मोटी यही समझ में आया कि बिगो यही चीज़ है, ठीक है। बिना मैनुअली सबको चेक किए, जैसे अभी चेक कर रहे थे परफॉर्मेंस डॉट नाउ, उससे बिना मैनुअली चेक किए हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सा दो फंक्शन में कौन सा फंक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है या एफिशिएंटली दिखा गया है, जो भी है, ठीक है, यही सब है और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज बेटर मीन, ठीक है, द प्रॉब्लम विथ टाइम, ठीक, डिफरेंट मशीन्स record different times, same machines are different, ठीक है, तो how fast is the speed measurements may not be precise enough, ठीक है। If not time data, something seconds which are so variable, ठीक है। Let's count the number of simple operations computer has counting operation। अरे आगे बढ़ गया क्या, शायद लेक्चर से आगे बढ़ गया, चलो ठीक है, एक बार करके देखते हैं हम उसको, परफॉर्मेंस डॉट नाउ क्या है, कैसे हम उसको कर सकते हैं, या नया चीज़ सीखने को मिला था तो हम करके देखते हैं। How we write them. So just to show you this one, it does work. I have another snippet over here. I can run the same thing. Let's do it with 6 again. And I'll do Command Enter to execute, and I get 21. And just to walk through what happens there, it's the equivalent of taking 6 plus 1 first, which is going to give us 7. And then we multiply that by 6, which gives us 42. And then we divide 2 seconds or milliseconds, and how to use, because they illustrate my point. This one is definitely less than 1, up to and including some number n. If you're not familiar with snippets, basically it's a way for me to just, rather than copy and paste and you hang it out at the bottom, you got under use because it's different. I not to believe that the fastest, or is it about how much memory is used? Is it, the रुको यार, सबसे पहले हमको देखना Hey, है welcome किस तरह back. से किया था।
यानी पहला एल्गोरिदम है, इसमें हम क्या किए हैं, यानी पहला कोड है, इसमें लूप लगाए हैं, ठीक है। तो लूप क्या किया, स्लो काम किया। और ये क्या हो गया इंटरनेट को मेरे, ये तो ठीक है। चलो भाई, ऑडियो कहाँ चला गया। I am printing it out at the bottom, the result of adding up to 6. So that should be 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. To execute it, I can either click over here, or you can see the shortcut it suggests to me on a Mac is Command Enter. It will say the correct shortcut on a PC. Execute it. चलो ठीक है, एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम इसमें नहीं करेंगे, कहाँ था, सोर्सेस में था। सोर्सेस में यहाँ पे स्निपेट्स है क्या, अरे ये तो रहा स्निपेट्स, ओके, न्यू स्निपेट। चलो वाह, यहाँ पे हम डायरेक्टली कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कितना कमाल का चीज़ है ये, ग्रेट, टोटली ग्रेट। चलो करके देखते हैं, यहाँ पे हम दो को, अरे इसको क्या हो रहा है स्क्रीन को, पता नहीं यार क्या हो रहा है बार बार। तुम लोगों को पता नहीं शायद दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, ये पूरा स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है। चलो क्या हो रहा है यार, फंक्शन ऐड अप टू, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, ज़ीरो टोटल ले लिया, उसके बाद लूप चलाएं, टोटल प्लस वन, टोटल प्लस वन किया, टोटल रिटर्न टोटल, ठीक है। एन T1 का परफॉर्मेंस नाउ, T1 2 कंसोल लॉग टाइम इलैप्स्ड, ठीक। और उसमें हम ठीक ऐड अप टू 3, ठीक। पहले हम लूप लगाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले FUNC अप टू N, ठीक है। N तक करेगा, N तक करेगा तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट x यानी लेट टोटल, अभी कितना है, 0 है, ठीक। और अब क्या करेंगे, लूप लगा देंगे, लेट x लेट n बराबर 0, n लेस देन, अरे n क्यों कर रहे हैं, n तो यहाँ पे है ना, नम। यार स्कोप वगैरह सब हमको रिवीजन करना पड़ेगा फिर से दोबारा। लेट n बराबर 0 ऐसे ही नहीं होता है, लेट मी चेक, लेट n आई, सॉरी 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 सॉरी, आई 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 बराबर 0, एक मिनट, आई इज इक्वल टू 5 मंथ्स के बाद सब कुछ भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आई इज लेस देन इक्वल टू NUM, ठीक है। आई प्लस प्लस, ओके, ठीक है। और इस तरह होगा, टोटल टोटल प्लस आई, यही है ना, टोटल प्लस आई, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू आई। और फाइनली रिटर्न टोटल, रिटर्न भी करते हैं, रिटर्न टोटल, ओके। और इसके बाद लास्ट में लेट T1 यानी टाइम जो है, लेट T1 बराबर परफॉर्मेंस डॉट नाउ, परफॉर्मेंस कैपिटल था कि स्मॉल था, स्मॉल था, अच्छा ठीक है। इसका बिल्ट इन फंक्शन है, यानी बिल्ट इन मेथड है, सॉरी, परफॉर्मेंस डॉट नाउ, ठीक है। उसके बाद क्या था, लॉग, नहीं सॉरी, ऐड अप टू,
ऐड अप टू 4। अरे भाई नहीं यार, ऐड अप टू 4, लेट T2 परफॉर्मेंस डॉट नाउ। ठीक है, उसके बाद हम कंसोल लॉग करेंगे, कंसोल डॉट लॉग। एक मिनट, टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ही कहते हैं ना इसको यार, भूल गए हम टर्म वगैरह भी। ये हो गया, ठीक है, बैक टिक। उसके बाद टाइम इलैप्स्ड, ठीक, इसके पहले डॉलर लगता है ना, ऐसे ही ना होता है। हाँ, T2 माइनस टी 5000 सेकेंड्स, ये मिली सेकेंड्स में आएगा तो इसलिए T1। एक मिनट, अब इसको ब्रैकेट में सबसे पहले T2 माइनस T1। ठीक है, अबे हट यार, बाय 1000 सेकेंड्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब करके देखते हैं हम, बूम, अनडिफाइंड आ गया। क्यों? अरे मेरे स्क्रीन को क्या हो रहा है भाई, मेरा स्क्रीन सह नहीं पा रहा, अनपॉट एरर। देखो क्या हो रहा है मेरे स्क्रीन को। चलो, फोटो लेने आया तो ब्लॉक। अनएक्सपेक्टेड टोकन कौन से लाइन पे है? अनएक्सपेक्टेड टोकन, अनपॉट सिंटेक्स एरर कहाँ पे है भाई? इसको रन कैसे करेंगे? अच्छा, कंट्रोल इंटर रन। प्रिंट नहीं किया कुछ, ऐसा क्यों? कोड में कुछ गलती थी क्या? फंक्शन ऐड टू एन, ठीक है, लेट टोट 0 फॉर लेट वन आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस, ठीक है। रिटर्न टोटल, यहाँ तक तो सही किए, ठीक है, +1 परफॉर्मेंस नाउ टू टाइम elapsed। एक मिनट, कंसोल कर रहा है प्रॉपरली, कंसोल लॉग हाय। ये कहाँ प्रिंट कर रहा है भाई? ये तो सेव हो गया, ठीक है। अब करते हैं, हाई भी कहाँ प्रिंट कर रहा है? कैसे प्रिंट करेगा ये? हेलो, अनडिफाइंड प्रिंट कर रहा है। एक मिनट, हाई प्रिंट तो किया ये, 1 2 3 4। ओह यार, देखना पड़ेगा ना पूरा, इसको ऊपर करते हैं पहले, ये और ऊपर नहीं हुआ क्या? अच्छा, इसको थोड़ा आउट कर देते हैं, ठीक है। अब करते हैं, छोड़ो इसको, ये और यहाँ पे इसको अनकमेंट करते हैं, ठीक है, सेव करते हैं, तब रन करते हैं। अब देखते हैं क्या बता रहा है। टाइम इलैप्स्ड 0 सेकेंड। अच्छा, 0 सेकेंड हुआ, इतना जल्दी हो गया, ठीक है, लेकिन निकला क्या? ऐड अप टू,
log console.log add up to 4। अब आया ना, अब आया, ठीक है। 10 हुआ, 4 तक हो रहा है, 1 2 3 4, 4 3, ठीक है, 10 आ तो रहा है रिजल्ट सही। और इसको फिर से देखते हैं करके, अलग आ रहा है, बार बार अलग अलग नंबर आ रहा है, ठीक है। 0.0000, इसमें लूप लगा हुआ है ना, इसमें लूप लगाए हुए हैं, ठीक है। तो हम दूसरा फंक्शन करते हैं जिसमें बिना लूप लगाया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम अभी कमेंट आउट करते हैं और फंक्शन एड अप टू नम, ठीक है। क्या था, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यही था ना, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, यही था। The other function. रिटर्न n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है, यही चीज़ था, ठीक है। यानी डायरेक्ट करेंगे नम n इंटू एन प्लस वन, n प्लस वन तो इसमें रहता था ना, ब्रैकेट में रहता था ना, ओके। तो ब्रैकेट में हम कर दिए और बाय टू, ठीक। इसको रन करके देखते हैं, पहले सेव कर लेते हैं। इसमें भी 0 टाइम लग रहा है, अरे कुछ तो डिफरेंट दिखाओ यार, दो तो लगभग बराबर नहीं लग रहा है हमको इसमें। 1 मिनट बराबर इसलिए लग रहा है क्योंकि इसका क्वांटिटी हम थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तो क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ऊपर जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 2। अब देखते हैं, अब तो टाइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, चलो। 0 सेकंड कैसे लिख रहा है ये, T2 माइनस T1, यही चीज़ हुआ ना, 5000 सेकेंड्स। 1 मिनट, टाइम 1 2 माइनस टाइम 1, ठीक है। परफॉर्मेंस डॉट नाउ ऐड बीच में कर दिया है, ठीक। तो यार इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस दिखा रहा है। अच्छा, और बढ़ाते हैं नंबर, छोड़ो हटाओ, 3 0 और बढ़ाते हैं इधर, और 3 0 नीचे बढ़ाएंगे, 1 2 3, आ जा भाई, 3 तो भी लग, 3, चलो एंटर। इतना कम सेकंड लग रहा है, ठीक है, लगभग 0 सेकंड 0 सेकंड 0 सेकंड दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसको हम कमेंट आउट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा फास्ट है, और इसको हम करते हैं, अब देखते हैं दोनों कैसा है। हाँ, अब आया ना ऊँट के पहाड़ के नीचे, देख 0.7 0.7 0.7, टाइम भी लगा है थोड़ा, 0.79 0.7, हाँ ठीक है। अब मज़ा आ रहा है, तो इसको काम करते हैं, थोड़ा और बढ़ाते हैं, 2 3 0 और बढ़ाते हैं, 3 0 और बढ़ाते हैं, 1 2 3। इसको वैसे कंसोल करने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3, चलो ठीक है, छोड़ो इसको, हम कमेंट आउट करते हैं, हटाओ। अब करते हैं, इसमें तो अब लगता है 1 कुछ सेकंड लगना चाहिए, आ जाओ। अच्छा, टाइम लग रहा है अच्छा खासा, पसीना उतर गया बेटे कंप्यूटर तेरा। हम्म, छोड़ो, नहीं हुआ लगता, इसका हार्ट फेल कर गया, तो उसके लिए 2 0 कम करते हैं, चलो ठीक है। चलो रिलोड करते हैं, पेज स्निपेट तो रहेगा, ठीक है। इंटरनेट को क्या हुआ, तो यानी लूप अगर हम यूज़ करेंगे
तो वो क्या करेगा, टाइम को बढ़ा देगा, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी को बढ़ाएगा। फिलहाल तो यही लग रहा है देख के। चलो भाई, इस इंटरनेट को क्या हो गया मेरे, छोड़ो हटाओ। स्निपेट दूसरे इसमें बनाते हैं, इसको कॉपी करते हैं पूरा। कॉपी, जा भाई तू, जा जा, तेरे से नहीं होगा। कंट्रोल शिफ्ट जे, कहाँ था, सोर्स में था ना, सोर्सेस में था स्निपेट्स। ठीक है, ये भाई हट टू कंसोल। अब देखते हैं, थर्ड पार्टी कुकी विल बी अनलॉक्ड रन टाइम लिसनर इंडिकेटेड। अच्छा है, 7 सेकेंड्स लग गया। अरे भाई 1 मिनट, अब मजा आ रहा है ना खेल का। 2 जीरो हटा दिए, ठीक है, 2 जीरो हटा देते हैं और 1 मिनट इसको ऊपर करते हैं। ये ऊपर कैसे होगा, ये ऊपर नहीं होगा, ये कोई दिक्कत नहीं, इसको ऊपर करते हैं। इतना ज़्यादा देर, 7 सेकेंड्स लग गया इसको करने में। ठीक है, तो एक बार बिना लूप के भी देखेंगे, 2-3 बार देख लेते हैं और शायद 5-6 सेकेंड लगे। अच्छा, 2 जीरो हटा दिए, कोई बात नहीं बेटा, 1 जीरो बढ़ा दिए ले। अब कर 0.7, 0.8। अच्छा, 1 जीरो बढ़ाने पे 7 सेकेंड बढ़ गया, ऐसा है क्या? फिर से देखें करके, हालत तो खस्ता हो गया इसका। 0.76, देखो 7 सेकेंड, 7 सेकेंड लग गया इसको एक कोड को चलाने में, ठीक है, लूप के साथ। अभी बिना लूप का करते हैं, ठीक है, इसको हम अनकमेंट करते हैं और इसको हम कमेंट आउट करते हैं, यानी अनकमेंट करते हैं। चलो इसको चला के देखते हैं कितना टाइम लगा। कमाल, 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 0.2 सेकेंड में हो गया ब्रो। डिफरेंस देख रहे हो तुम? ठीक है, तो इसको हम फिर से कमेंट आउट करते हैं, जस्ट टू बी श्योर, श्योर होने के लिए फिर से कमेंट फिर से करते हैं, ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। देख रहे हो, 7 सेकेंड, 7 सेकेंड लगे एक लूप लगाने में, यानी टाइम कम्प्लेक्सिटी, क्या कहेंगे उसको, टाइम ज़्यादा लग गया इसको एग्जीक्यूट करने में। तो हमारा कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन को हम, अरे छोड़ो, पहले ये सब कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कंक्लूजन। समझ गए क्या हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है, कूल, वेरी वेरी कूल। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम भी करके देख लिए, जस्ट टू बी श्योर कि कैसा होता है, क्या होता है। नहीं, लूप लगाने से क्या हो गया, टाइम बढ़ गया एक्सिक्यूशन का। Okay, well, we talked about the problems with using time as our way of comparing code. So, if we're not using time, what should we do? Well, it's a very similar thing. Rather than counting the exact seconds that it takes for code to run, which can change so much, what we can do instead is count the number of simple operations that a computer has to perform, because that remains constant no matter what computer we're on. So if we just simplified it like crazy and said that, this one algorithm has 5 operations to run and the other one has 7, it doesn't matter what the specifications of my computer are or the mood that my laptop's in that day. The time we get might be different, but the times will always be determined by the number of operations. So we can use that rather than the exact times. We can just focus on the number of simple operations the computer has to perform. So what I mean by simple operations, if we take a look at this example, the shorter one-line version that was faster. We've got a multiplication happening. We have after that an addition, so that's another operation. And then we have a division. Things like the number 1 or 2 aren't operations. The computer doesn't really need to do much there, at least compared to multiplication, addition, and division. Those are operations. So there are 3 operations, and it doesn't really matter what n is. If n is 2, or if n is a billion, there's only 3 calculations that are happening. So 3 simple operations regardless of the size of n.
whether it's small or massive. If we compare that to our other solution, the first one, this one has a few more operations. So let's start here. We see a plus sign, which we saw in the last video, and we counted that as one operation. But there's a difference here because this is in a loop. So if n is 5, we're adding 5 things. So that's 5 operations. If n is 20, there's 20 pluses. If it's a billion, there's a billion pluses. So it's not just one operation anymore, it's n operations, n additions. And actually, it's more than that because the equal sign is it's an assignment. Now, I hope you definitely shouldn't get too bogged down in the details of counting every minute operation because, as you'll see in a moment, all that matters is the general terms of things, a very, very fuzzy overview. So this distinction doesn't really matter. But to be clear, yes, this is another operation, and it happens as n grows. There's more assignments that happen. So quickly running through these, we've also got this here. So plus plus is shorthand for I plus equals 1. So there's a plus in there, and there's an equals. So 2 simple operations. However, they happen one time each per n. That's not a good way of saying that. They happen more as n grows. So if n is 10, we've got 10 additions and 10 assignments. If n is a billion, we've got a billion. So they scale with n. Then up here, we've got 1 assignment. So this only happens once because it's not in a loop. It happens one time at the beginning. And then we also have this here. This is a single assignment. I equals 1. That happens once as well at the beginning of the loop. We start with I equals 1. And then we've also got comparisons here. I less than or equal to n. And that is n comparisons again. If we're dealing with 20, this loop runs 20 times. We compare I to n 20 times. So yeah, counting these operations can be tricky. Overall, how many would we say there are? If the previous one, there was 3 operations, what do we say about this one? I mean, it's not a static number. It's not a constant number like 3. So how do we generalize it? There's a lot of ways of counting it and of arriving at an answer, but it could be as high as 5n plus 2, right? 1, 2, 3, 4, 5 plus 2. So if n is 10, we've got 50 operations plus 2 that are outside the loop, so that means 52. That's one way of doing it, but what I want to say is that it doesn't really matter because regardless of the exact number, whether it's 5n plus 2 or 2n or 3n or even 50n, it doesn't matter because what we care about is a general trend. And this is what we're going to see a lot with big O. We're focused on the big picture. So in this case, as n grows, the number of operations grow roughly in proportion with n. Okay, well, we talked about the problem. Okay, so this will be really... अरे रुक जा भाई, तुरंत में फॉरवर्ड कर देता है आगे. लास्ट का पॉइंट क्या था? of the लास्ट का पॉइंट था डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी काउंट, नंबर ऑफ ऑपरेशंस कैन बी एज लो एज 2n or as high as 5n plus 2. But regardless of exact number, the number of operations grow roughly proportionality with n. सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको हम हटाते हैं और ये जो है इसको अरे यार ये आ जाए भाई, यहाँ से यहाँ तक. अरे हो जा कॉपी मेरे भाई. चलो ये फंक्शन हो गया और ये पूरा का पूरा. एक बार इसको स्टडी करते हैं अच्छे से, ठीक है. ठीक है, ये इसको कमेंट आउट करते हैं, यानी कमेंट हटाते हैं इसका. तो सबसे पहले हम क्या देखें कि n हम जितना भी बढ़ा रहे हैं, ठीक है, n हम जितना भी बढ़ा रहे हैं. अरे यार ये जूम कैसे होगा? तो अच्छे से जो दिखे, तुम लोग को लाइव स्ट्रीम में देख रहे हो तो
ये हो गया। ये देखो जितना भी हम नंबर डालेंगे, ठीक है, ये 0 0 0 0, हम जैसा समझे हैं नंबर ऑफ ऑपरेशंस जो है, नंबर ऑफ ऑपरेशंस मतलब प्लस माइनस डिवाइड ये सब, ठीक है, ये सिर्फ 3 ही है। 1 2 2, 1 मिनट, ये मल्टीप्लाई है पहला ऑपरेशन, दूसरा ऑपरेशन ये प्लस हो गया, सॉरी कहाँ चला गया, ये प्लस हो गया, और तीसरा ऑपरेशन क्या हो गया, डिवीजन हो गया। यानी 3 ऑपरेशन है रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एन। ठीक, पहला तो ये हो गया, लेकिन यहाँ यहाँ क्या है, यहाँ लूप है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, पहला इस लाइन में असाइनमेंट तो एक ही बार होगा, ठीक है, एक ही बार एन, यानी एन जितना भी है ये पूरा फंक्शन में, इस पूरे फंक्शन में असाइनमेंट तो एक बार हो गया। लेकिन अब जितना है नंबर ऑफ एन, जितना नंबर है, यानी ये लूप कब तक चलेगा, जब तक ये एन के बराबर ना हो जाए, नम के बराबर ना हो जाए। नम का काउंट यानी 1000 डालेंगे, तो जब तक नम में 1000 डालेंगे, तो जब तक ये नम 1000 नहीं हो जाएगा तब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है, तब तक ये लूप चलता रहेगा, यानी 1000 बार ये लूप चलेगा। और 1000 लूप चलने के बाद भी एक लूप में ये ऑपरेशन हो गया असाइनमेंट ऑपरेशन, ठीक है, ये कंपैरिजन ऑपरेशन हो गया 2, ये इंक्रीमेंट ऑपरेशन हो गया 3, फिर क्या हो गया, ये एडिशनल ऑपरेशन हो गया, ये 4 एडिशन ऑपरेशन 4, 4 तो इसमें दिख रहा है। अब 4 इंटू 4000, यानी अगर मान लो 4 इंटू नम हम डाले 1000, तो 4 इंटू 1000 4000, टोटल यहीं पे हम लोग को 4000 ऑपरेशन करना पड़ रहा है, ठीक है, 4000 ऑपरेशन यानी ऑपरेशन। लेकिन यहाँ कितना ऑपरेशन कर रहे थे, मात्र 3 ऑपरेशन कर रहे थे, ठीक है। यार रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एन, रिगार्डलेस ऑफ नंबर्स ऑफ एन या नम जो भी कहो, या पैरामीटर जो लिया नंबर, ये जो पैरामीटर नंबर लिया, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एन, कहाँ से लगा रहे, ये कहाँ से लगा, हाँ, रिगार्डलेस ऑफ नंबर ऑफ एन ऑपरेशन कितना करना पड़ रहा है जावास्क्रिप्ट को, 1 2 3, लेकिन यहाँ कितना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए अभी जो देखे थे इसका परफॉर्मेंस 7 सेकंड ले रहा था, ये कितना सेकंड ले रहा था, 7 सेकंड्स ले रहा था, और ये कितना सेकंड ले रहा था, 0.2 सेकंड। ठीक, क्लियर है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ओके, ठीक, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट का, लगभग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम आते हैं स्ट्रीम पे वापस। 5 मिनट्स ब्रेक, और आई एम कमिंग। माइक को ऑफ कर देते हैं अपने।
लगभग 10 मिनट का ब्रेक था और फिर से आ चुके हैं। लेट्स लॉक एंड लोड। ठीक है, तो काउंटिंग इज हार्ड यहाँ तक तो देख लिया। ये काउंटिंग ऑपरेशंस भी देख चुके हैं। टेस्टिंग आवर कोड ये शायद नहीं हुआ था। ठीक है, ये भी तो हो ही गया है। चलो, A really quick video, but I want to show something I'm kind of proud of. This is a little widget that I've made that helps us विजुअलाइजिंग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, Okay, so this will be a really quick video, but I want to show something I'm kind of proud of. This is a little widget that I've made that helps us understand or plot the time that functions take to execute and get a general graph, a chart that shows us a trend. So there's only 7 of them in here, and we're going to focus on the first 2. Add up to first. I had to give them unique names before they were both called add up to, but add up to first uses the loop. Add up to second uses that little shortcut. Let me see if is that big enough to see. And so we select one of them. Then I can specify a value for n and hit plot and then change n. And what I'll do is increase n, and we'll see some sort of chart that shows what happens as n grows larger. And this is basically just done with a timer in the background. So I click plot, starts a timer, it does the operation, stops the timer, and then plots it. And then we do it again, and it connects the dots and builds a little graph. So what I want to show you is that if we take this first one, add up to second, which was the one that was faster. We already know it's faster. But what we talked about in the last video is that there are 3 operations, 3 things that take time. Let's think about it that way. This other one, there's a lot of things that take time. But this, there's 3, and there's always 3 things that take time, no matter what n is, if it's 10 or a billion. So I'm going to plug in a number for n, like 100, and I'm going to hit plot. And it's going to time it. So what it's plotting for us here is not the number of operations, because that's always 3. It's plotting the time. Okay, so we only have one value, so it doesn't really mean much. Let's add in 1,000. There we go. Let's add in 10,000. Okay, so it does seem like this is an extreme slope all of a sudden, but just hang in there because we pop back up. And if we look at the difference here, it's a matter of, what are we talking about? Is these, I can't remember if these are nanoseconds, what that little symbol means. It's a very small fraction of a second. So it looks like this chart is all over the place. And it is on such a small. ये y एक्सिस पे क्या है? अच्छा, ये y एक्सिस पे टाइम है जो कि elapsed है, और नीचे जो x एक्सिस पे वो n है। इन नंबर ऑफ ऑपरेशंस बढ़ाएं या घटाएं और टाइम क्या क्या होता है वो देखें। Scale. But what I want to show you is that we don't really care about that. We care about a general trend. And when we switch over to add up to first, I'm going to do the same thing, but I'm going to start again with 100. So we're going to add up the first 100. And remember that in this case, unlike add up to second, where it was a constant number of operations, and add up to first, the number of operations depends on n because of this loop. So if we start with 100, okay, you can already see that it's definitely slower. Let's go to 1,000. All right, definitely looks slower again. 10,000. Keep going here. Keep adding in. I'm going to keep going so that we can get a generalized trend. Okay, and that last one took a little bit, and the next one will take a couple seconds, so I'm not going to do it. But what we can see here is that there's a pretty good line that's pretty easy to follow. And as n grows larger, which is down here, the time grows in proportion, which we kind of discussed in the last video, although we were talking about the number of operations. But this is actually time being printed here. And you can see that it follows what we were talking about. It's not perfect, but overall, it's pretty close. And same thing down here, where we said that for add up to second, it's always 3 operations. It's the same number of operations, no matter what n is. So the time is pretty constant. It fluctuated, as you saw, when we were working on such a small scale. It did go up and down. But overall, when we're comparing the two, this is significantly better. And if I run this last one here, I mean, take a look at that. As n grows, the time doesn't really change.
Now, if we zoomed in, it would be slightly different, but it doesn't matter because this is a massive difference, 1.2 seconds versus a couple of milliseconds. So we'll be revisiting this tool to talk about some of these others as we go. But here are our first two generalized trends where we're comparing two algorithms that do the same thing. And you can see that they have vastly different big picture overviews of their performance. रुक जा भाई। ठीक है, तो ये जो अभी जो किए हैं उसको देखते हैं किस तरह ग्राफ को चलाया जाता है, क्या है समझते हैं। ट्रैकर टूल, परफॉर्मेंस ट्रैकर टूल, ये है। चूज अ फंक्शन एंड स्टार्ट प्लॉटिंग। चूज अ फंक्शन। अच्छा, अभी सिर्फ दो करते हैं, ठीक है। और ग्राफ को देखें किस तरह होता है। एड अप टू फर्स्ट, एड अप टू फर्स्ट, एड अप टू सेकेंड। अच्छा, इसमें क्या है, लूप लगाया है और इसमें नॉर्मली जो ज़्यादा जो फास्ट है उसको लगाया है, ठीक है। टू डाउन। अच्छा ठीक है, तो ये पहला दोनों से लो करना है, ठीक है, कंपेयर, ठीक है, ओके। तो करते हैं लूप वाले से। लूप वाले से देखते हैं 100 ऑपरेशंस करने में कितना टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, टाइम बढ़ा नहीं, एन बढ़ा नहीं, किस तरह चलाएंगे ग्राफ को। अच्छा, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ एन बढ़ेगा वैसे वैसे टाइम बढ़ेगा, ठीक है। तो टाइम, तो एन इज प्रोपोर्शनली टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो ग्राफ क्या है, इस तरह चल रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ठीक है। इसको अगर हम बढ़ाते हैं तो, ओ भाई साहब, ठीक है। और बढ़ाते हैं, ये हुआ क्या, टाइम बढ़ गया, ये जो नीचे था टाइम वो उठ के ऊपर चला गया, ठीक है। देखते हैं क्या है, अब कैसे प्लॉट करता है। ब्रो, टाइम देखो कहाँ जा रहा है, टाइम तो तुम आसमान छू रहा है। पहला दोनों यहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है। अब ज़ीरो बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो ग्राफ है ऊपर वाला डॉट जो है वो पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, और ये अगला जो ग्राफ बनेगा एक ज़ीरो ऐड करके, अरे एक ज़ीरो ऐड ही नहीं किया। अब देखना कितना भयानक ग्राफ होगा, अरे बाप रे। एक और ज़ीरो बढ़ाते हैं, समझ गया, ठीक है। टाइम देख रहे हो कहाँ आसमान छू रहा है। ठीक है, तो इससे करते हैं हम, इससे, ठीक है। पहले रीलोड कर लेते हैं पेज को, चलो ठीक है। ऐड अप टू सेकेंड, यहाँ पर डालते हैं 100 से शुरू करते हैं। तो अभी तो कुछ नहीं पता चलेगा, अब देखते हैं। ज़ीरो, एक ज़ीरो बढ़ा के टाइम में तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं महसूस हुआ। ब्रो, टाइम देख रहे हो, टाइम ऊपर, टाइम के ऊपर जो जो डॉट है टाइम के ऊपर जा ही नहीं रहा है, टाइम क्या होगा वही लगेगा। और ज़ीरो बढ़ाते हैं, हाँ अब टाइम थोड़ा बढ़ा, एक और ज़ीरो लगाते हैं। अरे भाई साहब, टाइम तो एकदम छिला ही लगा, ठीक है। एक ज़ीरो और बढ़ाते हैं, मतलब टाइम इसमें बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो ग्राफ के मदद से हम सीखे किस तरह टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ये सॉरी, टाइम कम्प्लेक्सिटी काम करता है एक लूप वाले में और एक बिना लूप वाले में, ठीक है। ठीक है, मोटा मोटी समझ में आ रहा है। काउंटिंग इज हार्ड, कहाँ तक थे अब। विजुअलाइजिंग तो देख चुके हैं, ऑफिशियल इंट्रो टू बिगो। All right, so we finally actually introduced the term Big O. We've basically been talking about Big O without actually saying the term Big O notation. So let's actually let's reveal it now.
So big O is just a way of formalized fuzzy counting. It allows us to talk in a very formal way about how the runtime of an algorithm grows as the inputs grow. That's it. It's a way of describing the relationship between the input to a function or as it grows and how that changes the runtime of that function, the relationship between the input size and then the time relative to that input. So we don't care about the other details, only the broad trends. So we've already been talking about broad trends. We talked about, okay, as n grows here, in this first solution down here, it doesn't matter. It doesn't impact the time that it takes. But in our second solution, which is confusingly called add up. तो ये जो लूप वाला जो था फंक्शन, ये टाइम को प्रोपोर्शनली बढ़ा था, प्रोपोर्शनल टू n, टाइम को बढ़ा रहा था प्रोपोर्शनलिटी टू n, सॉरी प्रोपोर्शनली. इंग्लिश उतना अच्छा है नहीं मेरा, ठीक है, तो ज़्यादा जज मत करना तुम लोग. To first, as n grows down here, the runtime also grows in proportion, roughly in a linear one-to-one pattern with n. So that is big O, what we've been talking about. We just haven't actually been using the correct label. So here's a bit of scary text. We say that an algorithm is big O of talking about linear one-to-one pattern with n. So big O notice, ठीक है. It allows us to talk formally about how the runtime of an algorithm grows as input grows. ठीक. तो big O क्या करता है, हम लोग को एक तरीका यानी एक मेजरमेंट बताता है, ठीक है, कि किसी भी एल्गोरिदम में इनपुट अगर बढ़ाएंगे तो आउटपुट का जो रन टाइम होगा, कैसे समझाएं यार, मतलब इट अलाउज अस टू टॉक फॉर्मली अबाउट हाउ द रन टाइम ऑफ एन एल्गोरिदम ग्रोज एज द इनपुट ग्रो. यानी इनपुट जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो रन टाइम कैसे बढ़ता है वो बिग ओ नोटेशन बताता है, ठीक है. वी वोंट केयर अबाउट द डिटेल, ओनली द ट्रेंड्स, ठीक है. That is big O, what we've been talking about. We just haven't actually been using the correct label. So here's a bit of scary text. We say that an algorithm is big O of f of n if the number of simple operations the computer has to do is eventually less than a constant times f of n as n increases. It's a bunch of gibberish, really. What it's saying, though, is that there's a bunch of these. I'm just going to put them all out here for now. There's a bunch of options. If you haven't seen this notation, by the way, this just means a function with an input of n and then the output. So we're describing the relationship between the input and then the runtime. So it could be linear, meaning that as n scales, the input, the runtime scales as well, which we've already seen. It could be something different. It could be quadratic, where as n grows, the runtime square is related to the square of n. Or it could be constant, which we've already seen as well. As n grows, it doesn't really have an impact because runtime is always constant, which we simplify down to 1. Or it could be something entirely different, and we'll get to some of these other options later on in the course and later in this section. You can always come back and just think about it as, when n grows, as an input grows, what is this chart going to look like? Is it going to grow roughly proportionately with n? Is it going to be constant? If we had a square, it would, be a lot steeper than this. One thing I want to highlight is that when we talk about big O, we're talking about the worst case scenario. So we're talking about basically the upper bound for runtime. So let's revisit our examples from earlier. This first add up to, where we only had 3 operations, and it's constant. It's always 3 operations. So the line we looked at was this one down here that roughly is constant. Remember, in the real world, it's not. It goes up and down a little bit, and runtime does vary, but overall the trend is that it's flat. So we could say that this has a big O of 1. And this is the notation that we'll see. So when you see a big O and then in parentheses, you see 1 or you see n or n squared or n log n or log n, things we haven't gotten to, that is telling us that as n grows, as the input to this function grows, in this case, it has no change. It's not reflected in the runtime. But if we take a look at this one,
add up to n, same name. This was the one that had a bunch of operations that are happening where we said that it grows as n grows, the runtime grows, basically in a 1-to-1 ratio. Linear है, ठीक है. The number of operations is eventually bounded by a multiple of n. It doesn't actually matter if it's 1n or 5n or 50n, because at the end of the day, we simplify it down just to n. And we're going to talk about the rules for simplifying these expressions. But basically, we're concerned with just the order of magnitude. So we don't care if it's 5n or just plain old n. It's the same when we're charting it on a massive chart and we're zooming. Number of operations is eventually bounded on multiple of n. Way out, and we're just carrying in a fuzzy way, I guess is what you would say. So here's another example we haven't seen. It's called count up and down. And all that it does, I'll just copy it over. I don't actually have a, a snippet for it, but let's just plug in 10. Okay, so our output is going up 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. At the top, going down 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Back down. All right, so if we were trying, यानी एक लूप क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है, और दूसरा लूप क्या कर रहा है, डिक्रीमेंट कर रहा है. to figure out the big O for this function, we'd start by saying, all right, so here, as n grows, we have roughly n operations. We have a loop. So there's big O of n here, because this, as n grows, this loop grows. Same thing down here. As n grows, this loop grows. It's just doing the same thing in the other order, going back down. So you might think that the big N is 2n, but remember that we don't care about that. We care about the big picture, so we simplify it to big O n. So if we go back to our performance tracker, I do have count up and down added in here. So let's plot it out with 100. Let's do 1,000, 10,000. And you'll see, I think that's the last one I'll do. It's taking a while. The next one will take forever. There we go. And you can see there, we get that chart that we discussed. This is the big picture of anything that has big O of n. And we have one more example. And this one's different. We haven't seen this yet. So we have a nested loop. So what it does, it's called print all pairs. And if I plug in 5, it's going to print every pair of the numbers 0 to 5. So it'll be 0, 0, 0, 1, 0, 2, all the way up to 5, 5. And I won't show you the example, but you can trust me, that's what it does. And there's 2 loops. And just like we discussed with the loop, this loop is based off of n, this first one. So that's big O of n, right? As n grows, this is going to be n number of operations, roughly. But then we have a nested loop, which is also the same thing, O of n, which just means that as n grows, this loop, the number of times it runs, grows as well. But this is not O of 2n, which simplifies to O of n, because it's nested. And that gives us something else. An O of n operation inside of an O of n operation is O of n squared. So what this means is that as n grows, the runtime roughly grows at the rate of n squared. So that's a pretty significant difference. And if we plot it out, which we will in just a second, you'll see that. But hopefully that makes sense. I don't know why I paused there. Hopefully that makes sense of why there's such a difference. Because if we step through this, if n is, let's just think about the number of pairs. If n is 2, we have the pair 0, 0, we have 0, 1, then we have the pair 1, 0, and 1, 1. So there's 4 pairs. But if we increase n to 3, all of a sudden we have 9 pairs. I won't go through them all, but it increases very quickly. If we increase to 4, we've got 16 pairs. So I said I wouldn't do this, but I added it into my console, print all pairs. If we do 2, there you go, we get the 4 pairs. If we do 3, we get a lot more, 9. Now if we go here and plot this, print all pairs, I'm going to start pretty small and do 10. I'm not even going to go to 100 right away. Let's do 50. Now let's do 100. Let's do 120. 150. All right, so you can see what we're working with here. And I'll try 200. It might take a little while. Okay, I'll leave it at this. This is a different overall trend, a fuzzy version of the chart. We're not looking at a linear thing where as n grows, the runtime is roughly proportionate.
it's proportionate to n squared. So as n grows larger, the runtime grows even larger. It grows n times n larger, roughly. And just to show you this, if I increase this to 300, it's going to take a lot longer. And I think I was playing around with 500 earlier, and that was about as much as my computer browser wanted to do at the time. Oh dear. Okay, so there you go. You can see that this, what used to look very steep, now that we've added in 500, that doesn't look so bad, and now it looks really steep, which is the exponential curve. Remember that it's just a generalized way for talking about how efficient an algorithm is. As an input n grows, how does that change or reflect in the runtime? So we've seen a couple of options. We saw add up to first, which was basically big O of n. As n grew, the output, the runtime grew relative to n. Then we had up to second, add up to second, which was constant. It always took roughly the same amount of time. Then we had count up and down, where it was the same as add up to first. If n grows, if it triples, then our runtime is roughly going to triple. And then finally we saw print all pairs, which was our first quadratic, O of n squared. Where as n increases, the runtime increases roughly at the rate of n squared. So I'm hoping I didn't lose you there. If I did, well, we have some exercises after this. जहाँ तक हमको थोड़ा मोड़ा समझ में आया है, तो एक मिनट इसको थोड़ा बाहर लूँगा। अरे भाई मेरे नीचे जाओ। अरे चलो ठीक है। तो ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो 3 टाइप का समझ में आया, ठीक है। पहला क्या हो गया? पहला हो गया हमारा, मेरा कहाँ चला गया? यस, पहला हो गया O ऑफ n, ठीक है। दूसरा हो गया O ऑफ n स्क्वायर, और तीसरा हो गया O ऑफ 1, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो इनपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है। ये टाइम हो गया, ये इनपुट हो गया, ठीक है। तो इनपुट अगर बढ़ाएंगे, जैसे इनपुट बढ़ाए तो क्या हो गया, टाइम भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, इनपुट बढ़ा रहा है, टाइम बढ़ रहा है। यानी इनपुट बढ़ाए तो क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू टाइम हो गया। इनपुट बढ़ाया तो क्या हो गया, टाइम वैसे बढ़ा। इनपुट बढ़ाया, टाइम क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। इसमें अलग केस है, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें नेस्टेड लूप, वो भी देखेंगे। ये हो गया टाइम, ठीक है। ये क्या हो गया, इनपुट। यानी इनपुट जितना हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा क्या हो रहा है, टाइम लग रहा है, ठीक है। जो कि किस में लगता है, नेस्टेड लूप में, ठीक है। और ये किस में था, ये कौन से किस में था, लूप में, नॉर्मल लूप में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ इस टाइप का कुछ हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, जैसे बड़ा इनपुट, इनपुट भयानक रूप से टाइम बढ़ गया, ठीक है। इनपुट बढ़ा, टाइम बढ़ गया, ठीक है। और ये जो तीसरा है, इसमें क्या हो जाएगा कि ये टाइम हो गया ग्राफ, ये इनपुट ग्राफ हो गया, ठीक है। टाइम सेम ही रहेगा, ये टाइम नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इनपुट जितना भी बढ़े, टाइम क्या रहेगा, वही रहेगा, टाइम मिलेगा नहीं, टाइम ऊपर नहीं जाएगा, टाइम ऊपर नहीं जाएगा, टाइम वही रहेगा। तो 3 टाइप का समझ में। पहला है, पहला क्या हो गया, O1। शुरू करते हैं, अरे यार थोड़ा ऊपर आ जाओ, हाँ, 0n। ये क्या हो गया, लीनियर, लीनियर ग्राफ बनाता है, ठीक है। LINEAR, यानी टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इनपुट, ठीक। दूसरा ग्राफ आ जाते हैं n स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्वाड्रेटिक, स्क्वायर लगे तो क्वाड्रेटिक हो गया ना। इतना बेसिक तो मैथमेटिक्स पता ही है। यानी टाइम इज, इसको किस तरह बताएंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, डबल ही कर सकते हैं, स्क्वायर ही कर सकते हैं। इसमें किस तरह बनाएंगे रिलेशन। और ये जो तीसरा है,
ओ इज टू द पावर ऑफ 1, क्या बोल रहे हैं यार, O1 ये क्या हो गया, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ये कांस्टेंट ग्राफ हो गया, यानी टाइम कितना भी बढ़ा भाई, तो टाइम कितना ही बढ़ा, सॉरी इनपुट कितना ही बढ़ा, टाइम क्या हो जाएगा, वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, टाइम वही रहेगा, ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, Hopefully it will समझ help में out तो a आ ही little गया। bit. I recommend that you play around with that tool, but be careful because if you plug in super large numbers, it will take forever and or crash your browser window and you'll have to quit that window. कर रहे हैं धोखाधड़ी किसके साथ, अपने साथ चेस। तो कंटिन्यू Disable करते forming. हैं, सिंप्लीफाइंग बिग O एक्सप्रेशंस, ठीक है। All right, welcome back. So now we're going to talk more about simplifying big O expressions. We've already seen a little bit of this. I'm going to rewind. Here we go, a couple slides back. If you remember this slide, where we talked about how counting all these different operations can be tricky and that it doesn't really matter the exact count. All that we care about is really the general trend. And so we simplified this from 5n plus 2 to just n. We said that as n grows, the runtime grows proportionately with n. And it doesn't matter if it's 2 times n or 10 times n or... आई थिंक यार अब कंटिन्यू हम करेंगे कल, आज के लिए इतना ही, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं और ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस चैप्टर में यानी बिग O नोटेशन में 1 2 3, तो 2 तो क्विज है, 1 2 3, अच्छा 3, तो बेसिकली 2 ही बचा है या 1 ही बचा है क्या, हम एक हो गया स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। टोटल 2 लेक्चर बचा है, 3 क्विज बचा है, इसको कल करेंगे, क्विज भी सॉल्व करेंगे जितना भी है जिस टाइप का, और उसके बाद अभी तो शुरू ही हुआ है, तो एनालाइजिंग परफॉर्मेंस ऑफ एरेज, आगे बहुत कुछ है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं कल इसी जोश और जज्बे के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और गुड बाय। तो स्ट्रीम को ऑफ करने का टाइम आ गया है और मिलते हैं कल, बाय बाय।